Today I have with me National Award winning filmmaker Sudhir Mishra ji. So welcome to India today. Thank you. Okay, first of all, let's talk about Afwaah. What spoke to you about this film? Well, I made a film long time ago called Israt Ki Subhani. That was about advertising executives going through a troubled marriage. One day he's in a bar drinking and, he's upset and he slaps a gangster by mistake. And a night of terror begins for him. Through that you explored the world of gangsterism, advertising, what's a hero, what's not a hero. Plus it was a damn good thriller, I think. So it made 2 years before Satya. And I kind of set the trend for a lot of gangster movies after You that. did. So after this, now I thought everybody's telling me make another Israt, remake it. What's the point of remake? Can't visit your youth, you were different then, whatever. So I decided, one day this idea came to me, what if the monster chasing you is a rumor? And these days everybody's being chased by, a lot of people are being chased by rumors and it's devastating and the problem is there's no place to hide because the rumor will get there before you, always. Yeah. So I thought there was a damn good basis for a thriller. Also, somewhat of a comment on our times, and it's a terrific ride ensues after that. ना तो एक मज़ेदार सी फिल्म जो आपको जर्नी पे लेके जाती है, आपको बहुत चीज़ों से गुजारती है, बहुत सारे पात्र आपको मिलते हैं रास्ते में, तरह तरह की एक माहौल, एक तरह का एक छोटे शहर, एक एरिया का माहौल, एक शराफत का नतीजा, कहते हैं ना शरीफ होना चाहिए, मदद करनी चाहिए वगैरह वगैरह. तो एक आदमी उतरता है गाड़ी से मदद करने के लिए, फिर उसके साथ क्या होता है. तो it's an irony, but I think in the end you will, it's also, प्रॉब्लम अफवाह की एक और है इस मॉन्स्टर की. वो जो दानव जो है, वो अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो किसको पकड़ेगा ये भी नहीं पता, कौन उसके लपेटे में आ जाएगा. अफवाह की तो बात जिसने फैलाई वो भी लपेटे में आ सकता है, सही बात है ना. तो that's a problem with spreading rumors, an atmosphere of falsehood. Then if nothing is true, then anything can be true. Then if you can spread a rumor about me, I can spread a rumor about you, and we are living in this land of rumors where everybody is suspecting each other, everybody is angry with each other, everybody is accusing each other. It's not a very pleasant, happy place to be in. So that's the idea, but at the end of it, it's a thriller. Yeah. So it can also be a satire to current times. Yeah, I mean everything. I mean, I live in this world. I'm a filmmaker who sort of reacts to the environment. It's my country. I have a right to talk about it, and I think I have a certain background. I come from a slightly political background. Also, my grandfather used to be chief minister of MP at one time, and I gave it up to lift cans and be a production assistant and swap floors. So, but I've seen the big and the small. I've seen how power crumbles and stuff like that. So I mean, everything that you do will also be political, but not only political. Yeah. There's many other aspects to life. So one of them is political. You have seen generation in cinema, like you have had that background. So what do you think has changed over the years, knowing that change is the only constant? What has changed is very drastically in the film industry is the fact that there are now so many women. They were not there. So women technicians, my partner Renu Saluja was one of the few editors, but now full of, the industry is full of women taking over. Now the DOP, there's one place that in camera, there was very few women, but now you can see a lot of women, technical team everywhere, actors, all fields, so producers, executive producers, first assistants, everything, directors. So I mean, it's writers. So that has drastically changed, and maybe it will change the perception of how films are made. You'll tell some other kind of stories. Today there's more opportunities. So for example, the OTT offers a space which is not, you don't have to react to a film immediately. Right. So people did not like a Faraz. It apparently in quotes when it was released because less people came to see it, but OTT it suddenly flowered. Yeah. Suddenly it's a hit. Yeah.
right? Internationally, people are saying, so this OTT gives you time. You know, you can see a film in your own time, right? So because people are busy so all these factors no have come pressure in. as There's so such. much, so there's no pressure. You can see it when you like, Yeah. when you want to, alone with people, whatever. So that said, the theatrical experience is a unique experience and should be. And always people are writing off. अब ख़त्म हो गया सिनेमा, अब ख़त्म हो गया सिनेमा. जब वीडियो आया था तब वो 84 में बोलते थे. कुंदन शाह ने जाने भी दियारो बनाई थी, बहुत बड़ी हिट थी. मैं लिखा था कुछ, मैंने भी किया था उसमें. उसके बाद हमसे बोलते थे कि अरे ख़त्म हो गया सिनेमा, तो अब तो यार वीडियो आ गया, अब तो पायरेसी आ गई, तो सिनेमा तो अभी तक है. तो कुछ आएंगे अभी हिचकियाँ, सभी सॉल्व हिकअप्स अलॉन्ग द वे, बट सिनेमा एज ए कम्युनिटी एक्सपीरियंस कि आप हॉल में जाते हो, 200 लोग कम से कम साथ में बैठे हैं और अंधेरा होता है और आप एक शेयर्ड एनर्जी होती है उस हॉल की, तो वो एक्सपीरियंस तो अकेले नहीं होता. सब कुछ कटा हुआ कोई नहीं. अब लेकिन खैर कटा तो सब कुछ नहीं होता कि लोग फ़ोन पे बैठे रहते हैं अभी भी थिएटर में भी, बट you know, it's quite irreplaceable that थिएटर the theater experience. ऑल्सो बीच में आपने बात करी जाने भी दो यारों की, आपने स्क्रीन राइटिंग की थी उस फिल्म के लिए, तो कुछ ऐसा किस्सा हो उस दशक का, उस दौर का, जो आप बताना चाहो? नहीं नहीं, बहुत मेरे लिए तो स्कूल थी, सब कुछ था. कुंदन मैं 22 साल का था जब शुरू किया था मैंने उस पर काम करना. तो मतलब वो तो दैट वाज बाय द ग्रेस ऑफ कुंदन एंड पीपल लाइक दैट सईद मिर्ज़ा, कुंदन शाह, विनोद चोपड़ा, इस तरह के लोगों ने मुझे मौका दिया, तो आई वाज एक्सट्रीमली लकी. बट जब फिल्म बन रही थी तो ज़्यादातर लोगों को लगा था कि बहुत ही अजीब, समझ में नहीं आ रही ये क्या लिखी है और क्या बेढंगी सी फिल्म है, कुछ भी होता रहता है, बॉडी को एक्सप्रेशन बदलती रहती है, इधर लेके घूमते रहते हैं, इसको इसको लपेटे जा रहे हैं, वो कॉफिन पड़ी हुई है, ये क्या स्पोर्ट्स कार कर रहा है, वो लेके चला गया दारू पी के. एक्टर्स समझ उनको लगा कि ये कोई देखेगा ही नहीं. ज़्यादातर लोग नाराज़ थे, मतलब बट फिल्म देख के समझ में आया. हमको भी नहीं पता था, तो टू बी फेयर, यू नो, देयर वाज नो फिल्म लाइक दैट, सो वन वाज ट्राइंग समथिंग, हु न्यू वेदर इट वुड वर्क और नॉट, बट इट डिड, यू नो. एंड वी वर सो रिलीव्ड कि वो काम कर गई, कि मतलब कि महाभारत सीन वर्क कर गया, उसका हर डायलॉग इज बिकम पार्ट ऑफ शांत गदाधारी भीम इज लाइक अ वे ऑफ टॉकिंग, एंड बिकम मुहावरा सा हो जाता है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, इस तरह की लाइनें जो हैं. अब किसको पता, दैट स्टेड, दैट बिकम पार्ट ऑफ जनरल पार्लेंस, लिंगो. वेरी फ्यू, इट्स लाइक, यू नो, जाने भी यारों की लाइनें हैं, तेरा क्या होगा कालिया, शोले की लाइनें हैं, मेरे पास माँ है. They are very actually great lines are never punch lines. They are in a context. मेरे पास माँ है में क्या है, वो संदर्भ में. तेरा क्या होगा कालिया, इसमें क्या है, वो संदर्भ में. A line is part of a screenplay, part of a scene, and in that scene, in a context, it's perfect. And a great line is always very simple. थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, क्या है इसमें, है ना. तो इस तरह का शांत गदाधारी भीम, शांत क्या है, तो वो कौन उस कॉन्टेक्स्ट में है. तो जाने भी यारो वाज अमेजिंग. इट वाज वंस इन आई वाज माय स्कूल. मतलब मैंने सोचा था कि मैं बम्बई छोड़ के चला जाऊंगा अगर आता नहीं है मुझे काम. तो फिल्म देखी, मैंने कहा थोड़ा बहुत आता है, रुक जाते. अब वापस अफ़वाह पे आते हैं हम. आपके जो स्टार कास्ट है वो भी एक मेथड एक्टर बोलेंगे आप, बहुत स्किल्ड एक्टर्स है, बहुत स्किल्ड पैनल है आपके पास, जैसे भूमि पेडनेकर हो गए, सुमीत व्यास हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए. तो जब आप इन ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो वो जो शेयर थॉट, लाइक आपके थॉट्स का उनके थॉट मैच होती है, तो ऐसे किरदारों को, ऐसे एक्टर्स को डायरेक्ट करके कैसा लगता है? इस फिल्म में तो बहुत ही अच्छे एक्टर्स, मुझे तो बहुत कम तकलीफ हुई इसमें, क्योंकि तो नवाज तो है ही है, उसके बारे में जितना कहें कम है. तो बहुत ही अच्छा एक्टर है. और अब तो जब बुरी एक्टिंग करेगा तब उसका न्यूज़ बनेगी, उसके पहले तो अब कितना अच्छा है नवाज के बारे में तो यही है. भूमि बहुत सरप्राइजिंग हुई, मैंने पहले कभी काम नहीं किया, तो बहुत तैयारी से आती है और फिर अपनी स्पॉन्टेनिटी भी नहीं छोड़ती है, और बहुत ही प्रोफेशनल है. कमाल की लड़की है, बहुत इंडिपेंडेंट है, और उसका एक नज़रिया है. तो आपके पास हमेशा आती है कुछ एक सोच लेके सीन के पहले,
हमेशा हाँ बहुत उसका एक ख्याल है। सुमित बहुत अच्छा एक्टर है और मैंने उसको बहुत उल्टा रोल दिया है इसमें, तो उसमें बहुत अच्छा शरीफ आदमी लड़का, तो उसका एक डार्कर साइड है और बहुत इफेक्टिव है, बहुत बहुत अच्छा एक्टर है। When I listen your name anywhere, the one film that strikes to me is Chameli. It is completing 20 years this year. So, any anecdote from the film that you would like to share with us? Well, yeah, it's amazing because I mean I never worked with Chameli works because of Kareena, Yeah, right? it was very I phenomenal. kind of saw her and I decided to follow her, right? Follow her in the sense that I will let her perform and I let her be, right? और वो कमाल की एक्ट्रेस है और वो क्योंकि राज कपूर ये सब खानदान है, तो वो डायरेक्टर और प्रोसेस की बहुत इज्जत करती है। यू माइट नॉट सीम जिस तरह से वो बातें बड़ी अपने बारे में बड़ी कुछ हेविली बात नहीं करती, लेकिन यू इफ़ यू सी द प्रोसेस, यू नो, कभी भी जब मिसाल के तौर पे जब शॉर्ट में होती थी तो मैं हमें थोड़ी देर बाद मैंने कट कहना बंद कर दिया, क्योंकि जब मैं कट नहीं कहता था तो उसकी डिसिप्लिन ये है कि वो करती रहेगी परफॉर्म, वो कुछ ऐसा करेगी जो मैंने नहीं कुछ बताया उसको। So I've held on to her face a lot, in Chameli, if you notice. So I mean, she was terrific. 12 घंटे वो उस बारिश में वो जो साड़ी है उसका वज़न को 100 किलो हो जाता है, उसमें जब भीगती है उसमें बगैर कंप्लेन किए हर और वो जब आप बारिश में शूट करते हैं तो वो एग्जैक्टनेस ऑफ वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके लिए खड़ा रहना पड़ता है, वो रिहर्सल्स के लिए, और बारिश के साथ खड़ा रहना पड़ता है, तो वो जैसी प्रोफेशनल तो मैंने देखा ही नहीं, बहुत कम देखी, बहुत बहुत अमेजिंग प्रोफेशनल। तो जब हम OTT की बात करते तो there's a lot of talk around censorship. So, what is your take on ongoing discussion or any law that is said to be formed? I don't believe in censorship. So, I mean, it's not today, I've never believed in censorship. I think it's good to a mature, which is not to say that I don't dislike a lot of stuff that I see. But that said, it's being made. And to ban it is very difficult because where do you stop then? You can ban this and you can ban that. Somebody gets offended by this, somebody gets offended by that. Right. So, I mean, I think it's time people sort of, और देखिए ये जो इंटरनेट है और ये डिजिटल वर्ल्ड है ना, यू बेटर नो हाउ टू हैंडल इट ना। अब ये माँ बाप को अपने बच्चों को एक दूसरी तरह से बड़ा करना पड़ेगा। Also, it stops your creative liberty somewhere. Do you feel? आई थिंक सी इट इज़ लार्जर क्वेश्चन देन फिल्म्स। Yeah. जब आप बच्चों का, यंग लोगों का, क्रिएटर्स का, और क्रिएटर सिर्फ फिल्म वाले नहीं होते, वो साइंटिस्ट भी होते हैं, ये होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, अगर आप लोगों का एक जनरेशन का, एक सिविलाइजेशन का एक तसव्वुर, सोचना, इमेजिनेशन पे रोक लगाओगे एक, तो वो बन जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो सिविलाइजेशन बड़ा होगा जो खुल के सोचता है, जो हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है। खुल के सोचो, डिबेट करो। Thank you so much for joining us. It was